जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहिता तृतीये पार्वतीखंड। वसिष्ठ उवाच। मनोर्वंशोद्भवो राजा सोनरण्यो नृपेश्वर इन्द्रसावर्णिसंज्ञस्य चतुर्दशमितस्य हि अनरण्यो नृपश्रेष्ठ सप्तद्वीपमहीपति शंभुभक्तो विशेषेण मंगलारण्यजो बलि भृगुं पुरोदसं कृत्वा शतं यज्ञाश्वर्कार स न स्विचकार शक्रत्वं दीयमानं सुरैरपि बभूवु शतपुत्राश्च राज्ञस्तस्य हिमालय कन्येका सुन्दरी नाम्ना पद्मा पद्मालया समा यः स्नेह पुत्रशतके कन्यायाश्च ततोऽधिक नृपस्य तस्य तस्यां हि बभूव नगसत्तम प्राणाधिका प्रियतमा महिष्य सर्वयोषित नृपस्य पत्न्यपञ्चासन् सर्वा सौभाग्यसंयुता सा कन्या यौवनस्था च बभूव स्वपितृगृहे पत्रं प्रस्थापयामास सुवरानयनाय स एकदा पिप्पलादर्शे गन्तुं स्वाश्रममुत्सुक तपस्थाने निर्जने च गन्धर्वसददर्शः स्त्रीयुतं मग्नचित्तं च शृङ्गारे रससागरे विहरन्तं महाप्रेम्णा कामशास्त्रविशारदं दृष्ट्वा तं मुनिशार्दूलं सकामसंबभूवस तपस्वदत्तचित्तश्च चिन्तयद्दारसंग्रहम् एवं वृत्तस्य तस्यैव पिप्पलादस्य सन्मुने कियत्कालो गतस्तत्र कामोन्मथितचेतस एकदा पुष्पभद्रायां स्नातुं गच्छन् मुनीश्वर ददर्श पद्मां युवतीं पद्मामिव मनोरमां केयं कन्येति पप्रच्छ समीपस्थाञ्जलनाम्नुनि जनानि वेदयाञ्चक्रुन् नत्वा शापनियन्त्रिता जना ऊचु नरण्यसुतेयं वै पद्मनाम रमापरा वरारोहा पार्थ्यमाना नृपश्रेष्ठैर्गुणालया ब्रह्म उवाच तच्छ्रुत्वा स मुनिर्वाक्यं जनानां तथ्यवादिनां चतुक्षोभातीव मनसि तल्लिप्सुरभवच्च स मुनिः स्नात्वाभीष्टदेवं सम्पूज्य विधिवत् शिवं जगामकामि भिक्षार्थं मनरण्यसमां गिरे राजा शीघ्रं मुनिं दृष्ट्वा प्रणनाम भयाकुल मधुपर्कादिकं दत्त्वा पूजयामास भक्तितः कामात् सर्वं गृहीत्वा च ययाचे कन्यकां मुनि मौनी बभूव नृपतिः किञ्चिन्निर्वक्तुमक्षम मुनिर्ययाचे कन्यां सा तां देहीति नृपेश्वर अन्यथा भस्मसात् सर्वं करिष्यामि क्षणेन च सर्वे बभूवुराच्छन्ना गणास्तत्तेजसा मुने रुरोध राजस गणो दृष्ट्वा विप्रं जरातुरं महिष्यो रुदु सर्वा इति कर्तव्यता क्षमा मुच्छमापि महाराज्ञी कन्यामाता शुचाकुला बभूवुत्सन्नया सर्वे शोकाकुलितमानसा सर्वं शोकाकुलिं जातं नृपसम्बन्धिशैलप एतस्मिन्नन्तरे प्राज्ञो द्विजो गुरुरनुत्तम पुरोहितश्च मतिमाना गतो नृपसन्निधिम्य
राजा प्रणम्य सम्पूज्य रुरोद च तयो पुर सर्वं निवेदयाच्चक्रे प्रपच्योचितमाशुतत् अथ राज्ञो गुरुर्विप्र पंडितश्च पुरोहित अपि द्वौ शास्त्रनीतिज्ञो बोधयामास तु नृपं शोकाकुलांश्च महर्षीन् नृपबालाश्च कन्यकाम् उत्तमां नीतिमादृत्य सर्वेषां हितकारिणीं गुरुपुरोधसावुचु शृणु राजन् महाप्राज्ञ वचो नौसिद्धतावहं मा शुचः सपरिवारः शास्त्रे कुरु मतिं सतिम् अद्य वाब्ददिनान्ते वा दातव्या कन्यका नृप पात्राय विप्रायान्यस्मै कस्मैचिद्वा विशेषत सत्पात्रं ब्राह्मणादन्यं न पश्यावो जगत्त्रये सुतां दत्त्वा च मुनये रक्षस्वां सर्वसम्पदं राजन्नेकनिमितेन सर्वसम्पद्विनिश्यति सर्वं रक्षति तं त्यक्त्वा विना तं शरणागतं वसिष्ठ उवाच राजा प्राज्ञ वचः श्रुत्वा विलप्य च मुहुर्मुहुः कन्यां सालङ्कृतां कृत्वा मुनीन्द्राय ददौ किल कान्तां गृहीत्वा स मुनिर्विवाह्य विधिवद्विरे पद्मां पद्मोपमां तां वै मुदितः स्वालयं ययौ राजा सर्वान् परित्यज्य दत्त्वा वृद्ध्याय चात्मजां ग्लानिं चिते समाधाय जगाम तपसेवनं तद्वार्यापि वनं याते प्राणनाथे तदा गिरे भर्तुश्च दुहितुः शोकान् प्राणांस्तत्याज सुन्दरी पूज्या पुत्राश्च भृत्याश्च मुच्छर्मिर्पुर्नुपुं विना शुशुचु श्वाससंयुक्ता ज्ञात्वा सर्वपरे जना अनरण्यो वनं गत्वा तपस्तप्त्वातिशङ्करं समाराध्य ययो भक्त्या शिवलोकमनामयं नृपस्य कीर्तिमान् नाम्ना ज्येष्ठपुत्रोऽथ धार्मिक पुत्रवत् पालयामास प्रजाराज्यं चकारः इति ते कथितं शैलारण्यचरितं शुभं कन्यां दत्त्वा यथा रक्षं ध्वंसं चाप्यखिलं धनं शैलराजा त्वमप्येवं सुतां दत्त्वा शिवाय च रक्ष सर्वकुलं सर्वान् वशान् कुरु सुरानपि इति श्री शिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां तृतीये पार्वतीखण्डे नरण्यचरितवर्णनं नाम 34 जय गुरुजी।